we have to discuss about WordPress and how to install WordPress on Ubuntu and make a page of WordPress. So first of all, we require a LAMP stack. It's an environment for Ubuntu LAMP stack. So first of all, what we have to done, the sudo apt update -y. Yes, रूट का पासवर्ड मांगेगी तो यू हैव टू गिव अ रूट पासवर्ड. उस पर कुछ टाइम लगेगा. Now the second command, you have to install, say, apt sudo apt install Apache. Apache is, we need Apache for a WordPress. To make a WordPress page we need Apache -y. yes, -y. इसको माइनस ही कहता हूँ. प्रेस एंटर. ओके, मेरे पास पहले से Apache इंस्टॉल है. तो अब हम MariaDB हम कहते हैं डेटा सर्वर के लिए और डेटा बेस के लिए. MariaDB सर्वर हम डेटा सर्वर के लिए यूज़ करते हैं. Maria क्लाइंट हम डेटा बेस सर्वर के लिए यूज़ करते हैं. तो हम ये पहले इंस्टॉल करेंगे, sudo apt install MariaDB server and MariaDB client. Press enter. Reading the packages. पहले से मेरे पास इंस्टॉल है. आप लोग के साथ अगर इंस्टॉल है तो ये टाइम लगेगा, अगर नहीं इंस्टॉल तो कुछ टाइम लगेगा. देन इनर कमांड मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग समझ जाए. Then you have to install sudo MariaDB. It's command not found. Sudo systemctl unknown operation. Sudo systemctl MariaDB. Before, when we are configuring WordPress, so we have to start the MariaDB. So start the sudo start MariaDB. Sorry, I'll just make some command. Sudo okay, done. Now the third command is that you have to install libraries like MySQL's secure installation. So we have to install MySQL. Now this sudo MySQL secure installation. एंटर करंट पासवर्ड रूट. अगर आप लोग के पास कोई करंट पासवर्ड है, सॉरी, यू हैव टू प्रेस एंटर. ओके, एंटर. नाउ यू सक्सेसफुली सेट द रूट पासवर्ड. अगर आप लोग की रूट पासवर्ड क्या है, यस. न्यू पासवर्ड इज यस, जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं. फिर करेंगे रिन्यू एमएनएस यूजर, यस. disallow root login remotely, yes. Remove test update and access, yes.
reload privilege table, no? Yes. Okay, now we have to use the MariaDB. MariaDBs are installed in our computer. Now हमें अनजिप के लिए कुछ कमांड यूज़ करेंगे, हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम वीगिट का कमांड यूज़ करेंगे। तो sudo apt install wget happen y, yes, wget is already installed in my computer। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल ना हो तो you have to install wget like this command sudo apt install wget इनका मैं क्लियर कर देता हूँ। नाउ हम कमांड यूज़ करेंगे wget, ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, आप यहाँ से कॉपी करके कर सकते हैं। tps या wordpress .org organizations .latest .zip प्रेस एंटर, हमारे पास रिस्पॉन्स मिलेगी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में होगी, यू हैव टू डाउनलोड दिस ए कॉपी फ्रॉम माय लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक। कुछ टाइम लगेगा। ओके, इफ़ यू रन कमांड wget http wordpress.latest, तो ये आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी, मतलब जिप कमांड में। तो पहले हम क्या करेंगे, ls करते हैं, व्हाट यू दे लेटेस्ट जिप आप देख रहे हैं हमारे पास रेड डॉट में आ रहा है, ये तो हमारे पास ये अभी जिप फाइल में, तो हम इसको जिप कर देते हैं। तो हम अनजिप के लिए एक कमांड यूज़ करते हैं, sudo apt install unzip file, यस, रीडिंग लिस्ट काउंट डाउन मेरे पास पहले ऑलरेडी से इंस्टॉल है, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं हो तो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हम करते हैं अनजिप लेटेस्ट डॉट जिप, हमारे पास जो लेटेस्ट जिप, हम इसको अनजिप करते हैं, यस, रिप्लेस बाय वर्डप्रेस, रीनेम बी, ओके, एफ हम कर देते हैं, यस। अनजिप हो गई है। हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे cd वर्डप्रेस पे, cd वर्डप्रेस स्लैश वर्डप्रेस पे आके ls कर देते हैं। क्या क्या कमांड है, हम कह देते हैं sudo cp/r static /var www.html सॉरी डॉट नहीं, इसमें हमारे पास सारा डेटा पड़ा हुआ होता है, जो हम वर्डप्रेस कमांड पर है तो वह सारा www.html के इस फाइल में आती है, तो हम इसलिए यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। सॉरी यस, द फाइल मिसिंग ऑपरेशन, मैंने कुछ गलती की होगी, cp-r var www.html स्पेस देते हैं, सॉरी इंटर करते हैं, यस, डन हो गया। हम अभी इस कमांड पे आ जाते हैं, cd स्पेस var, हम टेप की कमांड से हम सिंपल www टेप की हमारे पास शॉर्टकट का बताती है, html, ये सिंपल में html डायरेक्ट ही आ जाती है। तो प्रेस एंटर, ये हम इस पे आ गए, ls कर देते हैं। तो हम sudo की कमांड से हम ये जिप डिलीट करें, index.html किधर है इसमें, तो यू हैव टू डिलीट दैट फाइल। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। sudo rm -rf
index डॉट HTML, यस डिलीट हो गया ls। ओके नाउ हम MySQL के जो लाइब्रेरीज है, वी हैव टू इंस्टॉल देयर लाइब्रेरीज। नाउ sudo apt install php MySQL php cyi and php gd। dot press enter. No, command is not found. Sudo, sorry I got mistaken in this kind of sudo apt install reading packages building dependency। हमारे पास इससे ये इंस्टॉल हो जाएगी, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। couldn't find any package from globe php gd क्यों? okay wait, हम ये कमांड sudo apt install php MySQL php cgi, sorry I got mistaken in some command, cgi and php dot cli and php dot gd minus y, yes command हम ये these are the essential packages of MySQL Apache, we are working on Apache, so that's why these are the essential packages. You have to install these kind of libraries, must, it's important. Taking some times, you have to wait for this. Please follow my commands, it's like very important. ओके हमारे पास सब कुछ बन चुका है। अब नाउ वी हैव टू चेक अवर IP कि हमारे पास ये बन चुका है या नहीं। तो IP/a ये है IP इंटल, आप इससे भी कर सकते हैं init 6 से भी 4 से भी, बट हम इस IP से चेक करते हैं कि हमारे पास इस IP से हमारे पास वर्डप्रेस की पेज बनी है। हम Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+Shift+C, you have to install this and then paste here, press enter। अमेजिंग what आउटस्टैंडिंग, हमारे पास वर्डप्रेस की पेज बन चुकी है कि हम किस तरह वर्डप्रेस की पेज बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास हमारी IP जो एड्रेस पे हमारी बन चुकी है वो ये है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। If we are getting started WordPress, we will need to know the following items before proceeding: database name, database, let's go, क्या मांगती है, हाँ डेटाबेस, हमारे पास ये सब कुछ बन चुका है वर्डप्रेस की पेज। ना जो मेरी पार्ट 2 की वीडियो आ रही है वहाँ से उसमें देखिए कि हम डेटाबेस नेम किस तरह देंगे, यूज़र नेम देंगे किस तरह, पासवर्ड किस तरह, डेटाबेस होस्ट टेबल प्रीफिक्स किस तरह देंगे। सो अगर आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आएगी सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।